Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. Today our video lecture is chapter number 12 from EVS book class 4th Reproduction in Animal short answer type questions. Last day we have completed chapter number 11 and today we will going to revise chapter number 12. Okay. What do you mean by reproduction in animal? Animals का जो रिप्रोडक्शन वो क्या है, जैसे कि यंग वन को वो क्या है बर्थ करते हैं, सारे एनिमल्स बर्थ करते हैं और कुछ तो है अपने जैसे उसको बर्थ करते हैं और कुछ है वो क्या करते हैं एक से बच्चा पैदा करते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनका होता है. ओके, तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में अपने जैसे एक और ह्यूमन बीइंग को पैदा करते हैं. डॉग है अपने जैसे और एक छोटा वाला डॉग यानी कि बीच यानी कि पप्पी को पैदा करता है. कैट है किटन को, ऐसे. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज देखेंगे. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? आंसर, the process by which a living being produce another of its own kind is called reproduction. ओके, एक जो प्रोसेस होती है, जो लिविंग बीइंग होती हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं अनदर अपने जैसे अनदर एक बच्चा को, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टिंग. व्हाट डू यू मीन by molting. ओके, molting क्या है? इंसेक्ट्स के आंसर, insects keep shedding their skin and change
their appearance, till they grow into an adult. This shedding of skin is called molting. This shedding of skin is called molting. जो इंसेक्ट्स क्या है, स्किन जैसे कि पैदा होने के बाद कैसा होता है, एक नरम ही होती है। जब तक वो चेंज नहीं होता है टिल दे ग्रो इनटू एन एडल्ट, यानी कि पंख वगैरह नहीं निकलती है उनके शरीर में, है ना, तो ऐसे ही रहते हैं वो। उस सेटिंग ऑफ स्किन को बोलते हैं मोल्टिंग। Question number 3. Question number 3 is, what are animals who lay eggs called? Give 2 example. What are animals who lay eggs called? Give 2 example. Give 2 example. Okay. Answer. Animals which lay eggs and hatch them are called oviparous. Animals which lay eggs and hatch them are called oviparous. For example, birds है और insects। ओके, ये 2 एग्जाम्पल के लिए बोले, ओनली 2 एग्जाम्पल, और भी है लेकिन ओनली 2 एग्जाम्पल्स लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, what are the young one? What are the
young ones of a frog called। जो young one frog को क्या बोलते हैं? The young ones, answer, the young ones of a frog are called tadpole। tadpoles, okay। Next and last question number 5। Question number 5 is, what is a larva? Give examples। What is a larva? Give example। Answer, eggs of butterfly and houseflies। Eggs of butterfly and housefly hatch into larva। For example, for एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जो बटरफ्लाई की एग्स को बोलते हैं, वहाँ से जो वर्म निकलती है वो है कैटरपिलर। और फिर जो हाउस फ्लाई के बोलते हैं मागोट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लास 4th में EVS का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर या नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।